Hello children, this is part 2 of chapter Womenswear. This is part of class 12 curriculum for fashion studies. Part 1 is already there in the videos, you can always check that over there. And part 2 will also be attached to the playlist of chapter 3. So chapter 3 की playlist में आपको सारे के सारे videos मिल जाएंगे chapter 3 के class 12th fashion studies के. This is part 2 of the chapter Women's Wear. Part 1 में मैंने आपको आधा चैप्टर कंप्लीट किया था. Part 2 में remaining half we are going to complete that. So here we are going to start with elements of design in women's wear. Elements of design क्या होते हैं? Elements वो चीजें होती हैं, वो components होते हैं जिनकी हेल्प से हम एक गारमेंट का डिजाइन बनाते हैं, उसको ब्यूटिफाई करते हैं. So there are 3 key elements of a garment and they are color, silhouette and fabric. ये 3 मेन चीजें हैं जिनको हम देख के हम एक गारमेंट खरीदते हैं. इनमें से कोई एक चीज कई बार हमें अपीलिंग लगती है, कभी 2 कभी 3, जिसकी वजह से हम कोई गारमेंट ट्राई करते हैं, उसको परचेज करते हैं. So the very first thing is color. The moment you see a particular color, many a times it attracts your attention. 2 is the silhouette. Silhouette is the outline of the garment. Sometimes it's an A-line silhouette, sometimes it's a flared silhouette, sometimes it's a tapering silhouette. अलग अलग तरह के silhouettes होते हैं, garment की outlines होती है जो हर season में popular होती हैं. So that a different silhouette is always identified by us. Next is fabric. Fabric again, what kind of a printing is done, what kind of a fabric, the moment you touch the fabric कैसा feel आ रहा है उसका, सारे elements होते हैं fabric के selection में. So एक designer basically अपना color board, mood board, swatch board बनाता है. So I have placed these a few mood boards here and swatch board also for you for your reference. Now here you would be amazed to see कि जो डिजाइनर्स हैं वो हर एक एलिमेंट को कितना डीपली स्टडी करते हैं. वो अगर एक सीजन के लिए अपनी कलेक्शन बना रहे हैं तो वो उस कलेक्शन में ध्यान रखते हैं कि कौन कौन से कलर्स वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट सीजन में पॉपुलर होने चाहिए, वो उनके उसमें कलर बोर्ड में आ जाएंगे. स्वॉच बोर्ड में कौन कौन से फैब्रिक्स वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट सीजन में वो पॉपुलर होंगे. And silhouette is basically a part of your mood board, as in what kind of a mood are you carrying for the next season, and then you develop designs for this. So color, women's wear में color की कोई end नहीं है. Women's wear is one particular sector in the industry which each and every designer or manufacturer or brand, I should say, loves to work with, because women's wear में उनको बहुत अनडाउटेडली काफी कंपटीशन होता है, बट उनको काफी एक्सपेरिमेंटेशन का भी स्कोप मिलता है जो मेंस वेयर या किड्स वेयर में नहीं मिलता. सो कलर प्रिडिक्शन इन वुमेन्स वेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट because women give a lot of importance to color undoubtedly. So the main 4 color groups or the palettes that the designer works on is pastels, neutrals, bright एंड डीप कलर्स. तो हर एक जो सीजन का उसका कलर पैलेट होगा वो उसमें कोशिश करता है कि ये चारों जो कलर के ग्रुप्स हैं उनको हमेशा रखे, बिकॉज ये चारों ग्रुप्स विमेन के अलग अलग मूड को प्रिडिक्ट करते हैं. सो पैस्टल कलर्स भी होंगे उसमें, न्यूट्रल भी होंगे, ब्राइट कलर्स भी होंगे और डीप कलर्स भी होंगे. He also tries and takes care कि जो कलर्स हैं वो एकदम अलग अलग इफेक्ट्स दें. सो मूड बोर्ड में उसमें सेम कलर से वो विंटेज लुक भी लेके आते हैं, वो सेम कलर से कुछ फेडेड लुक भी लेके आने की कोशिश करते हैं, उससे वो ब्राइट लुक लाते हैं, उससे वो सॉफ्ट लुक लाते हैं, मेटालिक लुक लेके आते हैं, रस्टिक लुक लेके आते हैं. सो इट इज द मूड ऑफ द डिजाइनर. As per the theme that he has selected, he brings a change in the same color. उसके tones को change करेगा, उसके tints को change करेगा, उसके shades को change करेगा, and he plays around with that. And here again you can see कि 2 strips colors की placed है, blue color और yellow color, और उसके कैसे shades वहाँ पे place करें. So he works on different color shades or combinations that he feels
are going to go great in the next season when it comes to women's wear. मैंने कुछ और मूड बोर्ड्स आप लोगों के लिए पिक करे हैं टू शो यू दैट मेटालिक लुक है तो कैसे वो अपना मूड बोर्ड बनाते हैं, किन एलिमेंट्स को वो ध्यान रखते हैं उसमें। अगर वो नेचर ड्रिवन है तो वो क्या रखते हैं ध्यान किन एलिमेंट्स का। इफ इट इज अ सॉफ्ट mood board, so then what colors that the designer puts in his mood board। हर एक सीजन से पहले डिजाइनर्स अपने मूड बोर्ड्स, स्वॉच बोर्ड्स, सिलुएट बोर्ड्स क्रिएट करते हैं। सो दिस इज वन दैट्स देयर इन योर बुक ऑल्सो, जिसमें फैब्रिक के जो स्वॉचेस हैं वो प्लेस करे हैं। एंड व्हाट व्हाई दे हैव डन इट, बिकॉज एक गारमेंट यहाँ पे शो किया है that a model is wearing this garment and the same garment will be popular, as in ये वाला सिलुएट पॉपुलर होगा नेक्स्ट सीजन में, बट और कौन से फैब्रिक्स पे ये बन सकता है। सो द फैब्रिक ऑप्शंस आर गिवन ऑन द स्वॉच बोर्ड। सो हर एक डिजाइनर का अपना तरीका होता है उसके मूड बोर्ड को प्रेजेंट करने का, बिकॉज वी ऑल थिंक डिफरेंटली, वी ऑल वांट द design to be identified and read in a different way. Now, apart from this, women's wear के जो mood boards होते हैं उनके ऊपर embellishments भी होती हैं। Embellishments are basically the add-ons that you do on a garment. Embellishments जैसे embroideries आप करते हैं garment पे, आप उस पे cut work कर रहे हैं, आप उसके ऊपर कुछ different technique से printing कर रहे हैं और फिर उसके साथ में आप mirror work कर रहे हैं। So different combinations of embellishments also. Next season, what you predict, you are, the designer places that also in his mood board. So women's wear, as I said, काफी experimentation होती है जो women's wear में possible है, and these designers, they do not think about missing it at all. So that's why I said embellishments. Then trims are laces that are there on the garment. सो लेसेस अलग अलग तरह की लेसेस होती हैं, अलग अलग तरह के रिबन्स होते हैं हर सीजन में, कभी कुछ इन होता है तो कभी कुछ आउट हो जाता है। सो अ फ्यू इयर्स बैक इट वाज लेसेस जो 5 इंचेस, 7 इंचेस, 10 इंचेस लॉन्ग ब्रॉड लेसेस थी। अब लेसेस बिल्कुल ही नहीं है या फिर बहुत ही नैरो लेसेस हैं। सो हर सीजन में इट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड द डिजाइनर नेवर फॉरगेट्स टू प्लेस दैट आल्सो इन हिज मूड बोर्ड। Prints and woven designs can be in a variety of patterns, as in जो prints है वो small prints भी हो सकते हैं, delicate floral prints भी हो सकते हैं, like the Laura Ashley prints. Large floral prints हो सकते हैं, that can be done with bold colors या फिर soft colors से भी कर सकते हैं उनको, finished geometric designs, checks. So all in all, as I did mention, सारे एलिमेंट्स होते हैं उनके मूड बोर्ड में डिजाइनर के, जो गारमेंट को डिजाइन करने में उन्हें हेल्प करता है। एप्लीक वर्क, यू नो व्हाट इज एप्लीक वर्क? एप्लीक वर्क वाज समथिंग जो इंट्रोड्यूस किया था कुछ लोअर सेगमेंट्स, हमारी जो सोसाइटी के लोअर सेगमेंट थे उन्होंने किया था, बिकॉज कहीं पे गारमेंट अगर कहीं से टॉर्न हो गया है, फट गया है, तो वो बेसिकली वहां पर कुछ डिजाइन एक दूसरा फैब्रिक का पैच लगा के कुछ डिजाइन फॉर्म में एम्ब्रॉयडर करके उसको फिनिश करते थे। एंड नाउ वी हैव दिस एप्लीक वर्क दैट्स सो इन कि अगर गारमेंट कहीं से टॉर्न नहीं भी है तब भी हम ये पैचेस इजीली दे आर अवेलेबल इन मार्केट और आप उन पैचेस को गारमेंट्स के ऊपर प्लेस करते हैं। देन डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोजर्स आर बेसिकली फास्टनर्स जो आपके गारमेंट को क्लोज करने में हेल्प करते हैं। बटन्स, जिपर्स, जो अलग अलग तरह के बटन्स या जिपर्स जो यूज कर सकते हैं आप गारमेंट की ओपनिंग्स को क्लोज करने के लिए, वो भी यहाँ पर होते हैं। पाइपिंग या इंटरलाइनिंग जो आपने लगानी है गारमेंट में, किस कलर की लाइनिंग लगानी है, वो कौन सा फैब्रिक होगा, वो सारी डिटेल एक डिजाइनर अपने पास में कलेक्ट करता है बिफोर ही स्टार्ट्स डेवलपिंग अ सैंपल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज फैब्रिक। फैब्रिक आपके गारमेंट की जो कॉस्ट है ना, उसका 50 to 80% कॉस्ट फैब्रिक कॉस्ट होता है। सो इट इज वेरी क्लियरली सेड कि आपने बहुत जुडिशियली वर्क करना है, आपने बहुत एलिमेंट्स को क्लियरली अपने माइंड में रख के चलना है दैट यस
मुझे फैब्रिक वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, बिकॉज ये गारमेंट जो बनेगा उसका 50 to 80% कॉस्ट तो मेरे फैब्रिक की कॉस्ट होगी. Now, what kind of a fabric needs to be used? Again, each season the texture of the fabric changes. और टेक्सचर के अकॉर्डिंगली उसका हैंडल और सरफेस क्वालिटीज भी चेंज हो जाता है. एज एन उसको कैसे आपने वॉश करना है या आफ्टर केयर कैसे करना है, वो सब एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं. आपने उस फैब्रिक को कैसे फिनिशिंग करनी है, कैसे स्टिचिंग करनी है, all these things are studied before the final garment is prepared. Then you have certain set of natural fibers, cotton, linen, silk, wool, and you have a huge variety of man-made fibers also. So women's wear में women love to experiment with different kinds of material, and that is why we offer them many a times not just the pure fabrics, but हम उनको blended fabrics बहुत offer करते हैं, and they love wearing that. Because of the change in the technology also, we've seen कि जो fabrics है वो consumer friendly बन गए हैं. That is आप you have garments for different occasions or purpose. ऑफिस में ऑफिस वेयर है जिसको हम फॉर्मल वेयर बोलते हैं. पहले वो काफी एक रिजिड गारमेंट होता था, बट आजकल ऑफिस वेयर में भी जो फैब्रिक है वो बहुत ब्रीदेबल है. सो ब्रीदेबल मीन्स इट गिव्स कंफर्ट टू द पर्सन हु इज वियरिंग इट. अपार्ट फ्रॉम दैट, it has a little bit amount of stretch also in it. अब stretchability जब उसके अंदर होती है तो then again the person wearing it the whole day finds it comfortable wearing. Easy to care हो गया because technological development से we are able to inform the customer also कि कैसे आपने fabric को maintain करना है, कैसा care उसको provide करना है. So each season, as I did mention, the color, the fabric, it keeps on changing. And yes, silhouette भी change होता है. Silhouette, as I did mention, क्या होता है silhouette? Silhouette एक garment की outline होती है. सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ए लाइन है तो वो ए लाइन शेप उसकी गारमेंट की आउटलाइन है. प्रिंसेस स्टाइल है जिसमें उसमें पैनल बना हुआ है, एंड जो प्रिंसेस लाइन है वो बस्ट के ऊपर से मूव करती है. बस्ट इज बेसिकली द एपेक्स पॉइंट. देन इज द कॉलम ड्रेस. कॉलम ड्रेस है जिसको आपने हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया है कॉलम्स में. देन यू हैव द मर्मेड स्टाइल, जो मर्मेड के जैसे जो उसका हेम है गारमेंट का वहां से फ्लेयर आउट करती है. देन वी हैव द स्लिप ड्रेस. स्लिप ड्रेस is kind of a spaghetti dress, so it has straps at the shoulder level. Then you have the ball gown. So ball gown is something that is very voluminous, काफी ज्यादा उसमें fabric consume होता है. This is the picture that you have in your book. So one can always ask a question, that is, what are the different types of silhouettes for women's wear? So आपके सामने 4 silhouettes हैं, आपने ये चारों नाम याद करने हैं: A line, empire, mermaid and column, right? So here you can see कि कौन सा silhouette किसको represent करता है. empire आपका basically जो है flare out करता है exactly bust के अंदर से. Mermaid can flare from the waist level, from the hip level, or even from below the hip level also. And a column dress is one जो again columns उसमें horizontally बनाते हैं, and then it is divided into two sections or more than two sections horizontally. First main division आपकी होती है जो under the bust end करती है, and then after that if you want to give more columns you can always do that. Garment collections and categories. इंडियन मार्केट की बात करेंगे हम, इंटरनेशनल मार्केट की बात नहीं करेंगे यहाँ पर. इंडियन मार्केट में जब एक डिजाइनर कोई अपनी कलेक्शन लेके आता है तो वो 10 से 15 मैक्सिमम 20 गारमेंट्स बना देता है. और वो कलेक्शन क्या होती है? गारमेंट कलेक्शन is basically the set of garments that the designer designs for a particular season. अब इन गारमेंट्स में कुछ रिजेम्बलेंस होती है, जैसे कलर, फैब्रिक, प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, किसी भी चीज में कुछ सिमिलैरिटी हो सकती है. अब अलग अलग कलेक्शंस आती हैं: इवनिंग वेयर, स्पोर्ट्स वेयर, कैजुअल वेयर, फॉर्मल वेयर, फेस्टिव वेयर, नाइट वेयर. एंड जो कैटेगरी नई आई है दैट इज मिटर्निटी वेयर. मिटर्निटी वेयर में इंडियन मार्केट में इतना ज्यादा अभी
scope nahi hai, but yes, dheere dheere it's growing as well in the Indian market too. Now there are four major size categories in women's wear. So starting from junior, then it is petite, then it is messy, and then it is women, right? तो हम इन टर्म्स को भी एक एक करके समझ लेते हैं. We'll start from junior. Junior कौन होता है? A girl, a young girl with developing body. इसकी body develop कर रही है. Body के अंदर there are less amount of curves in that body. So then that body is called as a junior body. ठीक है, उसका जो size है उसको junior बोलते हैं. Next is petite. Petite is a size for a lady, for a girl, for a woman who is shorter in height. और उसकी जो body है वो थोड़ी सी cylindrical है. Okay. Next is messy. Messy is basically a cut or a silhouette or a size that's for a lady, a woman, or a girl whose body is very curvaceous. It has lots of curves in it. And the last one is women's size. Women's size, it is cut of a garment to fit the shape and proportion of a mature woman's body. So ये चार मेन कैटेगरीज होती हैं साइजेस की और ग्रुप्स होते हैं साइजेस के women's wear में. Now we have the categories in women's wear. सबसे पहली कैटेगरी है ड्रेसेस. अब ड्रेसेस में कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं ड्रेसेस की. आप सिलुएट चेंज कर सकते हो, जैसे कि उसको ए लाइन बना सकते हो, फ्लेयर बना सकते हो, प्रिंसेस स्टाइल बना सकते हो, कॉलम बना सकते हो. Another possibility is the waistline. Waistline high low कर सकते हैं. So high would be जो waist highest position waist की होती है जब आप bust के exactly नीचे उसको end करते हो, and that is called as an empire line. Then you have low waist. Low waist jeans वगैरह trousers कितने popular थे. So you people must be very much aware about what is a low waistline. And a normal waistline is one जो exact waist level पे end करती है. Then you can bring a change in the length of a dress as well. उसको short कर सकते हो, calf length कर सकते हो, उसको ankle length कर सकते हो, उसे knee length कर सकते हो, above knee, below knee, ऐसे करके आप variations कर सकते हो. Neckline can be changed, sleeves can be changed, pockets can be added or eliminated. So all these are the different possibilities in a dress. Three main examples that are given are empire line dresses, princess dresses, and shift dresses. So we have these here. Low waist जो waist से नीचे waistline end होती है. So we have the low waist, empire waist. I have the shift dress also and a flared dress as well. Next garment is blouses. Now blouse is a garment that's meant for the upper part of the body. Okay, dress is a garment that's meant for upper and lower part of the body. As in you can have a short dress, you can have a long dress, you can have a very long dress. Blouse is something that's worn in the upper part of the body to cover the upper part. अब ब्लाउज की वेरिएशंस क्या है, उसको आप बॉडिस फॉर्म में बना सकते हो एज एन फिटेड ब्लाउज विद और विदाउट स्लीव्स. अब उसके अंदर स्लीव्स हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीव्स कैन बी डन. इफ इट हैज अ प्लैकेट दैट इज एन ओपनिंग, सो फ्रंट में ओपनिंग अलग तरह का प्लैकेट हो सकता है, बैक में भी हो सकता है, साइड्स पे भी हो सकता है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लैकेट्स कैन बी applied here. A blouse can also have a collar and it can be developed without a collar too. So these are the kind of variations that are possible in a blouse. Next is a skirt. Skirt is a garment that's meant for the lower half of the body. ठीक है, वो lower half को cover करती है. So skirt के भी अलग-अलग variations possible है. Straight line skirts है, flared skirts है, gathered है, pleated है, tied है. You also have paneled skirts. So different types of skirts are possible. And it is the basic garment that's skirt, and the styles can be changed always each season. Same is the case with trouser. Trouser is also a garment that is used to cover the lower half of the body. But ये bifurcated garment है. Bifurcated garment क्या होता है? Bifurcated garment is a garment that is divided. So ये legs के लिए इसको divide करते हैं, इसलिए इसको हम bifurcated garment बोलते हैं. And some styles that are possible in trouser are straight leg trouser. उसकी लेंथ को आप वेरी करके आप एक केपरी बना सकते हो. आप
बेल बॉटम या फ्लेयर्ड बना सकते हो, एज इन उसकी जो हेम है उसको चेंज करके, या फिर आप जोधपुरी पैंट्स बना सकते हो, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज द राइडिंग पैंट्स. नेक्स्ट गारमेंट इज a kurta salwar. Now salwar kurta is something that's worn together, right? So kurta is for the upper part of the body and salwar is for the lower part of the body. Salwar is a bifurcated garment. अब कुर्ताज में काफी सारे स्टाइल्स पॉसिबल हैं. कलीदार कुर्ताज हैं, कुर्ता विद योक है. योक क्या होता है, जैसे ये अभी ये जो डिजाइन है यहाँ पे स्लाइड में, हियर यू कैन सी कि एक डिजाइन बना हुआ है फ्रंट में जहाँ पे प्लैकेट बना है. दैट इज बेसिकली अ योक. अ योक इज another piece of a fabric that's attached to the main garment to add design into it. ए लाइन हो सकता है उसका स्टाइल, स्ट्रेट कुर्ताज भी हो सकते हैं. कलीदार कुर्ताज, kurtas with yoke, plain kurtas, they're all possible. Then as far as the salwar is concerned, patiala salwar ho sakti hai, the regular salwar ho sakti hai. You can also have the churidars also. Next is a sari blouse. Sari blouse is a garment that's worn on the upper part of the body and it is worn with a sari. Different design variations are possible, as in the regular plain sari blouse can be worn, or you can also have the choli cut sari blouses. Sari blouses में again sleeve, उसकी collar, उसका hemline, आपको सब change कर सकते हो. Now after this, children, you have these few terms in your book. First one is women's wear. Women's wear is a range of apparel in all product categories for women. Fashion show, professional presentation on the runway to showcase designers' interpretation of fashion trends for the next fashion season. Fashion shows held in the 4 fashion capitals of the world are a source of forecasting key trends. Next term is trend forecasting. Analysis-based prediction by trade professionals about color palette, yarn, and fabric development, surface treatments on fabric, silhouettes, and design details. Women's wear क्या है? एक range of apparel है जो एक category के लिए बना है, and that is women. Fashion show एक designer, एक manufacturer, एक brand करता है, professionally present करता है एक शो के थ्रू, रनवे शो के थ्रू अपने डिजाइन्स को अपने टारगेट कस्टमर के सामने रखता है. एंड ही डज दिस बिफोर द सीजन स्टार्ट्स, राइट, जिससे कि कस्टमर को पता चल जाए कि ऐसा कुछ नया स्टाइल आने वाला है मार्केट में, राइट. और डिजाइनर्स कहाँ से इन्फो लेते हैं या हम लोग को कहाँ से पता चलता है कि कौन से स्टाइल्स पॉपुलर है, कौन से नहीं है, कौन से पॉपुलर हो जाएंगे? इट इज ऑल थ्रू द forecast that is given to us by the main fashion capitals. Trend forecasting. Trend forecasting is एक जो फ्यूचर में जो ट्रेंड होना है स्टाइल का, उसको प्रिडिक्ट करना. और वो ट्रेंड सिर्फ एक कलर, एक फैब्रिक, एक सिलुएट नहीं है, बट ऑल इन ऑल पूरा गारमेंट है. उसमें कैसे फिनिशेस होंगे, कैसे एम्ब्रॉयडरीज होंगी, सब कुछ ट्रेंड फोरकास्टिंग में आ जाता है. एम्बेलिशमेंट. एम्बेलिशमेंट जैसे मैं बार बार ही कहती रहती हूँ, एम्बेलिशमेंट इज एन एड ऑन टू द गारमेंट. एड ऑन किस फॉर्म में? डेकोरेटिव टेक्निक के फॉर्म में. एम्ब्रॉयडरीज, एप्लिक वर्क, पेंट वर्क, किसी भी तरह से आपने एम्बेलिश कर दिया गारमेंट को, एक प्लेन गारमेंट को आपने ब्यूटिफाई कर दिया, आपने लेसेस अटैच करके कर दिया. दे आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्बेलिशमेंट्स. देयर इज अ कलर पैलेट. कलर पैलेट में रेंज ऑफ कलर्स होते हैं जो आपके गारमेंट या प्रोडक्ट पे यूज करते हैं in a particular season. Casual wear, that is everyday clothing for informal use. Ensemble, इस word को बोलते हैं ensemble, a complete look comprising a coordinated set of items of clothing including upper, lower, inner and outer garment. So ensemble एक डिजाइनर का होता है कि वो आपको एक गारमेंट भी देता है और वो उसके कोऑर्डिनेट्स भी देता है. दैट इज ये वाली शर्ट आप इस ट्राउजर के साथ पहन सकते हो और आप और किन किन ट्राउजर्स के साथ पहन सकते हो, वो सारे ऑप्शंस भी वो आपको देता है. ये ट्राउजर और शर्ट के साथ में आप अपर गारमेंट, आउटर गारमेंट क्या पहन सकते हो, आप इसके साथ में कैसा फुटवेयर पहन सकते हो, एक कंप्लीट आपके लिए लुक क्रिएट करता है डिजाइनर. एथनिक वेयर, वी ऑल नो दिस.
traditional dress of a community. Formal wear, clothing designed and worn on formal occasions. Indo-Western wear is basically a fusion wear which has a combination of Indian and Western silhouettes and details on it. I hope, children, this was helpful for you. We'll be sharing more questions for your practice. Don't have to worry. I have lots of questions that I'm working on and I've prepared for you all. So just give me some time. We'll be placing them for your good. I hope you liked it. And if you actually liked it and it did prove to be useful for you, do not forget to like the video and subscribe to the channel too. Thanks for watching.